is your numerical integration. So it can be done in several ways, among which 3 basic numerical integration method will be discussed in your course. Okay, so these methods are, first one would be your trapezoidal rule. Second one I'll be discussing is Simpson's 1/3 rule, and third one would be Simpson 3/8 rule. Okay, so in today's class I'll be discussing only the trapezoidal rule. So before discussing the trapezoidal rule, let me refresh your memories regarding integration. So what do you mean by integration, and why this integration is required? Or let me discuss the introduction of the integration, regular integration. I'm not talking about the numerical one. So why we do integration? Anyone? Yes, it's a shortcut method for summation. Any other thing? So what we can actually calculate, or what we can actually do with integration? So integration can be used to find the area. Double integration, surface integration are there. We can use to line. We can calculate. Suppose we can calculate the length. We can calculate area. We can calculate volume. Okay, and many other useful things you can calculate using integration. So let's consider there is a function y equals to fx. So these things are from your school mathematics. I'm refreshing your memories. Let's say the function is y equals to fx. Okay, so let me draw it. And this axis is the y-axis, this is x-axis, and I'm drawing it like this. Now if I ask that calculate this area, small a or small b, x equals to a, x equals to b, okay, and the area is a. So I'm asking you to calculate the area a. How do you calculate? There are several methods, there are several ways you can do. What you can do, you can take several rectangular elements. You remember that, right? Another rectangular elements like this, another rectangular elements like this, another rectangular elements like this, and by this way you can easily calculate. And so suppose this is your area a1, this is giving you a2, this is giving you a3, this is giving you a4, then a5, and so on. If you sum all these areas, a1, let's say I equals to 1 to n, okay. So if you sum all the areas, then you will get the total or entire areas. But you see here that when I am assuming rectangular system, then there is a chance of having error. Okay, so I am taking larger area than the curve. The curve is the black line, and I am taking this portion extra. Here I am taking this portion extra. So there is a chance of having error. So when I will be discussing any numerical integration, so it could have two parts. First part would be your simple integration formula and all, simple integration, numerical integration, and second part would be your error. So the integration part I will discuss in details, how to do any integration using several methods. Okay, the error part I'm thinking of, that will be initially and intentionally it will be discussed in a very simple way, and then you will face some difficulties. So you will have some resistance, or you will face some challenges doing or solving or calculating error by the simple method. Then I will discuss the actual method for calculating the error. So some point
of your problem solving cases, you will find some difficulties. There I will be discussing the actual error condition. Okay, so पहले जानबूझ के मैं ऐसे तरीके से ले जाऊंगा जैसे कि तुम लोग कुछ डिफ़िकल्टी फेस करोगे और लास्ट में मैं एक्चुअल जो मेथड होगा वो सिखाऊंगा कि कैसे करना है. Okay, so what we can do to calculate A? If I am asking what is A, then you can sum up all this. You can take slices and you can sum up. Okay, so what we can, let's say the width is delta x. Now if you take delta x small, then what will happen? You might have a smooth result. If you are taking delta x small, then you might have a smoother rectangles and you will have the area, and it will give you less error. Okay, so what our objective in integration or in summation is that we can make delta x a lot smaller and add up many smaller slices. So this is one way of doing this, that you are summing up small elemental areas and you are having this total area value. But we don't have to add them up, and there is a shortcut. That shortcut is your integration. So finding an integral is the reverse of, or a kind of reverse of finding the derivation. You know that, right? Okay, so I think you remembered how to do the integration. What would be the integration of if I am asking what will be the integration of 2x? If your fx equals to 2x, so what will be integration of 2x dx? Tell me. X square plus c. So I'm hoping that from your school mathematics you remember this part. Okay, now let's come to the main topic, that is your numerical integration. So let's consider integral, definite integral I equals to a to b fx dx, where write this down, y equals to fx, and it is given as, write down, given as the discrete set of point. That means you have the value of xi, yy. That means where I equals to 1, 2, 3, 4. What do I mean by that? Make a table, then you will understand. X, y. So first one will be x1, y1. Second one will be x2, y2. So there is this discrete set of data, and from there you have to calculate the integration and so on. So there is a formula which is basically derived from the Newton's forward interpolation formula we used in the differentiation method. So remember that formula. That's called, so the formula required here is the Newton course, write this down, quadrature formula. Okay, so I am assuming here, I am considering here that Newton course quadrature formula to calculate or to get the Newton course quadrature formula, I am considering y equals to fx. Okay, and I'll be writing f equals to at 0 point, where x equals to 0 at the I mean x0 point, if it will be f0, f of x0, f of x1 is f1, f of x2 is f2, and so on. ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूँ. If y equals to fx, and I'm denoting if at x0 equals to f0, if x1 is f1, x2 is f2. Okay.
and f of xn would be fn. So yn equals to fn. ये वाला समझ में आया सबको? ये मैं डिनोट कर रहा हूँ लिखने के सुविधा के लिए. To ease in writing, I'm considering y0 equals to f0, f of x0 equals to f0. Okay. Now, to evaluate, I write this down. Now, to evaluate I equals to a to b fx dx in the interval a to b. Okay, so you have to evaluate you have to evaluate this integration a to b definite integral fx dx. Okay, so first step would be divide the interval ab into n equal parts, into, write this down, n equal parts with h, just like we used to do in the derivation method, numerical differentiation method. ये कर रहे थे ना हम लोग, इसको डिवाइड कर रहे थे by using a specific step size. We are dividing into n equal parts. ये कर रहे थे ना पहले. एक्चुअली डेटा दिया था तो इसलिए मालूम नहीं चला, लेकिन एक प्रॉब्लम भी किए थे हम लोग जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द डेटा, द इनपुट डेटा यू विल बी यूजिंग देयर. यू डिड दिस वे. ओके, ऐसे किए थे ना? अरे बोलो. ओके, so to evaluate I equals to this Newton cotes quadrature formula is very important. और एक फार्मूला से सारे कुछ का डेरिवेशन का जो फार्मूला होता है वो निकल जाएगा. जो 3 मेथड मैंने बताया हूँ, those 3 methods you can the formulas required for those 3 methods can be derived easily using this formula, this Newton's cotes quadrature formula. So you have to understand this one very carefully. Now I am dividing the interval, because the interval lower limit is a and upper limit is b, and I am dividing the interval a and b into n equal parts with h. Okay, so let's say a equals to x0, x1, x2, x3, let's say up to xn. Then you will be reaching to b. Okay, means a equals to x0 and xn will be equals to b. Got it? x0 to xn हम लोग लिए हैं, where x0 is actually a value and xn equals to b value. जैसे कि तुम लोग confusion ना हो इसलिए मैं ये लिख दिया. Okay, now we can write xn equals to x0 plus nh, ये लिख सकता हूँ, and I will be equals to a to b fx dx. So, or you can write x0 to xn fx dx. So where nh value, nh equals to, tell me what will be the value of nh from this equation? What is nh? xn minus x0. Okay, or ab, the distance between a and b is nh, so it will be b minus a. ये छोटा छोटा चीज़ याद रखना है क्योंकि उतना तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में. So nh equals to b minus a. Okay, now we'll be using our old known formula that is called the Newton's forward interpolation formula.
So in Newton's forward interpolation formula, what we know that fx, okay, fx equals to f0 plus x equals to you can consider x equals to x0 plus nh. Okay, so f0 plus u delta f0 plus u into u minus 1 by 2 factorial delta square f0 plus u into u minus 1 u minus 2 3 factorial delta q f0 and so on. Our I is क्या है x0 to x0 plus nh. x0 मतलब क्या हो गया a, x0 plus nh मतलब हो गया b. Okay, so it can be written as fx dx. Okay, so h0 to n f x0 plus uh, यहाँ पे हम लोग u ही कंसीडर कर रहे हैं. So either we will write n or u. Let me show you actually. Okay, so x equals to x0 plus uh, f0 value is coming around u plus delta f0 and all. So I equals to x0 plus x0 to x0 plus nh fx dx. ये करेंगे हम, okay, and x will be equals to x0 plus uh dx h du. So हम लोग कर रहे थे fx equals to x0 plus uh, okay, not n, and डिफरेंशिएशन में जो न्यूमेरिकल डेरिवेटिव कर रहे थे हम लोग, वो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे. ओके, एंड x0 plus uh du. ओके, कहाँ से आ रहा है x equals to x0 plus uh, it can be written as dx. It can be written as dx equals to h du when x equals to x0 and x equals to x0 plus nh. Write this down. Done. Now I equals to, हम लोगों को क्या मालूम है, I equals to h0 to n. मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, x0 plus nh, sorry, x0 plus क्या था, tell me, x0 plus uh था ना, uh into du ये था. इसको हम अगर लिखते हैं 0 to n, then you will be writing f0 plus u delta f0 plus u into u minus 1 by 2 factorial delta square f0 and du. If I simplify this, then I will get h equals to h multiplied with integrate this one, first one, integrate this term, what will happen? Okay. Yes, tell me
how 0? If f0 is, let's say f0 is constant, then what will be the result? f0 is constant, uf0, it will be uf0. Similarly, delta f0, let's say constant, it will have some value. So consider delta f0 is constant. Now tell me what will be the value here. So initially I will write delta f0, yes, u square by 2. Now for this one, this will be the constant, let's say. So let me write this one first. Okay, tell me the value. Do it. So I'm keeping 1 by 2 factorial here. Now you have to only integrate this part. So you can simplify this part, like this is actually integration of, if I take only this part, this will be the integration of u square minus u du. Am I right? Tell me what will be the result. So u square minus u, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? u स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? u स्क्वायर du का इंटीग्रेशन क्या होता है? u क्यूब बाई 3 एंड ये वाला का माइनस u स्क्वायर बाई 2. सो मैं उसको लिख दूंगा यहाँ पे, u क्यूब बाई 3, आई विल राइट इट हियर, u स्क्वायर बाई 2 एंड दिस वन एंड सो ऑन. No, I'm keeping factorial to separate. Okay. Now what will happen if I take another term? Okay, sometimes you require this term. What will happen if you take like u minus 1 and u minus 2 by 3 factorial and cube f0 plus dot 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 and du here. So what will happen here? Tell me, if I take another term, and what will be the value here? So I am keeping del cube f0 by 3 factorial. फार्मूला का क्या है ना, एक पैटर्न में लाना है उसको, जैसे कि तुम्हें याद रहे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं. अभी बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 du का इंटीग्रेशन क्या होगा? जो भी बोल रहे हो बहुत ही सुना ही नहीं दे रहा है, बताओ. सो इट विल बाय 4 बाय, आई श्योर कैलकुलेट किए हो इसको. ई क्यूब बाई 3 होगा, एक बार चेक कर लो. e cube by, it will be u to the power 4 by 4 e cube minus plus u square. ओके, ऐसा रहेगा इंटू del cube f0 by 3 factorial and the limit is 0 to n. ये डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसे लिखते हैं, मालूम है ना. ये वैल्यू आ रहा है सबका, ये मुझे बताओ. अगर नहीं भी आ रहा है तो बताओ, मैं गलत भी हो सकता हूँ. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका. अब क्या करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में, भूल गए हो क्या? बताओ क्या करेंगे. लिमिट पुट करेंगे, पहले n वैल्यू पुट करेंगे, किसकी जगह पे? u के जगह पे. तो पहले n वैल्यू पुट करके देखेंगे, देन आउटपुट, देन क्या करते हैं, पहले जो है उसको u की जगह पे n पुट करके देखेंगे, माइनस ऑफ जो है उसकी जगह पे 0 पुट करके देखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे उसको. हाँ, सो अभी n पुट करके देखो और 0 पुट करके देखो कि क्या आ रहा है. सो 0 पुट करोगे तो सारे टर्म्स 0 हो जाएगा.
तो इसको सोचना ही नहीं है अभी. Only you have to think about this. Put or replace u with n. Just replace it and let me know. So if I write, this will be n f0 plus n square by 2 delta f0 plus n cube by 3 minus n square by 2 delta square f0 by 2 factorial. Okay, and fourth term would be n to the power 4 by 4 minus n cube plus n square del cube f0 by 3 factorial plus dot dot dot, and from here you can take n as common. So you will be writing nh. If you writing nh here, then so it will be nf0, it will be n by 2, it will be क्या होगा, ये हो जाएगा n square by 3, n by 2 del square f0 by 2 factorial and to the power 4 into the power 3, 4 था, इसको 3 हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा n cube, then it will be n square, then it will n, सिंपली n रहेगा क्योंकि ये था n स्क्वायर, तो वो n हो जाएगा एंड डेल क्यूब f0 by 3 फैक्टर. इसको बोलते हैं न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूला. लेट मी राइट दिस फार्मूला अगेन. मैं फ्रेश करके लिखता हूँ जैसे कि तुमको समझ में आएगा. सो I इक्वल्स टू nh f0 प्लस n by 2 delta f0 plus n square by 3 minus n by 2 delta square f0 by 2 factorial plus n cube by 4 minus n square plus n del cube f0 by 3 factorial and so on. Okay, so the problem lies, ये error आ रहा है कहाँ से? So I talked about error, and this error is coming from the approximations. So whenever we are writing any result, that result would be our approximated result, which will be near to the our actual result. So up to 5 decimal point में तुमको कुछ difference मिलेगा, ठीक है ना? Suppose your result should be 1, let's say, but if you do by numerical integration, you will be having, let's say, 0.9988889. तो एरर इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा आएगा ना, और ज़्यादा एरर आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो गलत है. दैट मीन्स योर कैलकुलेशन इज टोटली रॉन्ग. एरर शुड बी very small. Suppose it could be of 1.8 into 10 to the power minus 5, in that range. Got it? Error should be small. If you are comparing it with the actual result, then the error should be very less, in the order of 10 to the power minus 4 or 10 to the power minus 5. Then your numerical derivations is okay, you can say that. Okay, so this formula here, it's called the Newton course formula. And now putting the values of n equals to 1, 2 and 3, n equals to 1, if I approximate it, then it will give you the trapezoidal formula. If I approximate n equals to 2, then it will give you the Simpson's 1/3. If I consider n equals to 3, then it will give you Simpson's 3/8. कैसे, मैं उसको बता रहा हूँ अभी. So this formula is called Newton course quadrature formula. Write this down, it's very important. Now what I will do,
I will discuss. Did you write this down, class? Okay. So what I'll do, I will discuss this trapezoidal rule. I'll be deriving the formula required for the trapezoidal rule from this Newton course formula. So let's write down the heading that numerical integration using trapezoidal rule. So for trapezoidal rule, so for trapezoidal rule, what I'll do, I'll be putting n equals to 1 in the Newton course quadrature formula. So in Newton course quadrature formula, I'll be putting n equals to 1, and you will have a result. So suppose a curve, consider y equals to fx, and that curve is passing through 2 points x0, y0 and x1, y1. Okay, let's say this is the curve, ऐसे undulation है, and this is y equals to fx curve. So this is y axis, this is x axis, and let's say this is our x0 point and this is our x1 point, and later this one is our x2 point, and so on. Write down that curve is passing through x0, y0 and x1, y1 as a straight line. What I am trying to say here, see from the figure, this appears to be a straight line. Okay. In trapezoidal rule, we'll be using a let's say a rectangular structure or a trapezoidal structure. That's not a curved structure. Okay. So here I am considering that between x0 and x1, the curve is passing through this point number, this point x0, y0 and x1, y1, where the curve is straight line. Similarly, in x1, x2, in between, the curve is passing like a straight line. I have approximated it. I am considering that curvature part for particularly these 2 points are, so in between 2 points the curve is actually acting like a straight line. बहुत ही closely spaced line लिए हो तुम, तो जैसे कि curve जो straight line की तरह दिख रहा है. Okay. And then you are considering the linear equation, and as I am putting n equals to 1, that means I am considering second or higher order are equals to 0. So I am considering only n equals to 1, second or higher order terms are equal to 0. Okay. So what I will be doing here, I equals to, अभी तुमको थोड़ा सा मतलब difficult लगेगा, you find it's difficult this theory, but when I'll do a problem, then it will be very easier for you. Okay. So wait for the problem. I equals to x0 and x0 plus h fx dx, where h you can write, put n equals to 1 there. Okay, put n equals to 1, we'll be putting the n equals to 1, and second and higher order terms will be 0. So what I will be considering here, I will be considering if I calculating the x0 plus h. x0 plus h मतलब क्या है? Tell me, what do you understand by x0 plus h? What is x0 plus h? H is the step size. x0 plus h क्या है यहाँ पे? In this condition, x1. So x0 plus h means x1. x0 plus 2h means x0 plus 2h. h2
समझ रहे हो ना, ये h है एंड x1 के x2 के अंदर का जो सेपरेशन है वो भी h है। स्टेप साइज तो ऐसे ही होते हैं ना, डिफरेंस डेरिवेटिव में इतना डिस्कस किए। सो हम लोग सिंप्लीफाई मतलब बहुत ही सिंपल टर्म्स रखेंगे, जो पहला वाला टर्म है उसको रखेंगे, बाकी सब हम लोग भूल जाएंगे। सो पहला वाला टर्म एंड n equals to 1 I am putting here, so I'll be getting if I put so n equals to 1 means 1 dot h, so I'm writing only h, okay, and it will be f0 plus half delta f0। सेकेंड ऑर्डर टर्म्स वी आर नेग्लेक्टिंग, और ऐसे जो नेग्लेक्ट कर दिया उसके मतलब वो एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो टर्म तो इसके इंक्लूडेड इसका पार्ट था, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स एज वी आर नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स, एज वी आर नेग्लेक्टिंग द सेकेंड और द एनी सेकेंड ऑर्डर और एनी हायर ऑर्डर टर्म्स will having some error. Okay, so error is very important here. So your result will be converging when your result will be converging when you can say that you get the result. There should be some threshold value in error. Like, let me give you an example, like the modeling example I used to give before mid-sem, that in that modeling example you are matching data with the field data. This is the predicted data with the field data. Now if I this is the field data minus the predicted data, it's called misfit. Let's say I'm denoting with delta d. So delta d should be in order of, let's say, 10 to the power minus 5 or 10 to the power minus 4, depending on your experiment or depending on your numerical experiment. If it's below 10 to the power minus 5, then your result will be, you will be saying that okay, my result converges. मतलब error को कम होना ही है, then you are getting the actual result. Okay, so जब हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे, if I in this case we are neglecting the higher order term, that's why we are having errors. Okay, so what we can write, I equals to x0 to x0 plus h f0 half into delta f0. And delta f0, how you can calculate delta f0? Numerical differentiation. Remember your numerical differentiation class, how you can calculate delta f0? क्या करते थे हम लोग उस टेबल में? ना f0 के लिए क्या होगा, वो डेल्टा f1 हो गया। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और फॉरवर्ड मेथड के जरिए जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, उसमें क्या होता था, डेल्टा f0 इक्वल्स टू f1 माइनस f0, डेल्टा f0 का f1 माइनस f0 होगा और डेल्टा f1 होगा f2 माइनस f1, ऐसे होता था ना। तो मैंने वो वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, सो आई बी पुटिंग दिस वैल्यू हियर, h equals to f0 plus half f1 minus f0, ऐसे होगा, and it will give you the result of h by 2 f0 plus f1. so ये वैल्यू हो गया तुम्हारा x0 x1 के बीच में. Now what will happen if you want to calculate or if you want to integrate, or if you want to find the same area or same condition I value for in between x1 and x2, x1 and x2 के बीच में कैसे तुम निकालोगे, क्या होगा? I'll be writing I equals to x1 to x2 fx dx, x2 x3 के बीच में क्या होगा, x2 x3. ट्रापेजोइडल रूल में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो कर्व है, कर्व का दो पॉइंट ले रहे हैं जिसके बीच में जो कर्व इज एक्टिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन. सो ये मेरा x0 x1 हो गया, इसके बीच में x2 x1 x2 सपोज एंड दिस इज x3 लेट्स से. सो ये भी स्ट्रेट लाइन है एंड ये भी स्ट्रेट लाइन है. सिमिलरली ऐसे करते चले जाना है, एवरी एस्पेक्ट के लिए तुमको निकालना है, एवरी
कंडीशन के लिए तुमको निकालना है. सो इसमें क्या होगा, इफ़ आई consider it x1 means you can write this down. x1 means x0 plus h, x2 means x0 plus 2h, fx dx होगा. क्योंकि मैं अभी x1 x2 के बीच में निकाल रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड केस है. लेट्स से इसे I2. सो आई एम फाइंडिंग आउट I2 एंड बाद में क्या करेंगे ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 सब जोड़ देंगे तो हम लोगों का वो फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा. ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? Okay. Now, tell me what will be the result here. Following the previous calculation, you can easily write this value. What will happen? What will be the result here? अब कैलकुलेशन ही करना है, हम लोग एक बार कैलकुलेशन कर चुके हैं. Seeing that calculation, I will be writing the value here. Tell me. अरे बोलो. अरे क्या होगा इसका? यस क्या बोला फिर, मुझे ही समझ में नहीं आया. एरिक क्या होगा? What will be the value here? What will be the derived value here? Or what will be the derived expression here? पहले में क्या मिला था I1 में? टेल मी. बोलो. I1 में क्या मिला था? शुरू में जो किया, अभी जो किए h/2 f0 प्लस f1. ओके क्योंकि तब मेरे पास f0 f1 था. अभी मेरे पास क्या क्या है? ये x1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, तो मेरे पास क्या क्या है? h/2 f1 प्लस f2 होगा. बहुत ही सिंपल है. सिमिलरली फॉर in का लिए क्या होगा? इफ आई डू इट फॉर in, दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग x0 प्लस n-1h, x0 प्लस nh. इसका मतलब क्या है? xn-1 से xn तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक है ना? एंड इफ वी डू दैट, इसका वैल्यू बताना मुझे क्या आएगा. h/2 देन क्या होगा? ये f होंगे. सिंपल है. जो पहले एक बार कर चुके हैं उसको देख के मैं ये सब बना दी. अब क्या है ना, इसको जोड़ने की बारी है. सो यू हैव टू सम इट अप. यू हैव टू सम ऑल द I1 प्लस I2 प्लस I3. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अप टू in तक तुमने किए हो एंड इसको सम करोगे. तो सम करने से क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. वो क्या था? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट a to b fx. और अभी a b नहीं लिखते हैं, अभी के लिए मैं लिखता हूँ which was my objective x0 xn. ओके fx dx मुझे मिल जाएगा. और x0 का मतलब क्या है? x0 का मतलब है x0 means x0 is equals to a and xn equals to p, because we have already considered a equals to x0 and b is your final point is equals to xn. so a to b fx dx मुझे मिल जाएगा. कैसे? ये पूरा जो I निकाला हूँ उसको सम करके. सो इसको सम कर देते हैं. पहले मुझे I1 का वैल्यू मुझे मालूम है. I1 का वैल्यू लेट्स से h/2 f0 प्लस f1 है. I2 का वैल्यू भी मालूम है, h/2 f1 प्लस f2 है. सिमिलरली हम लोगों का in का वैल्यू लास्ट जो इंटीग्रेशन किए थे उसका वैल्यू भी मालूम है. वो भी h/2 fn-1 प्लस fn हो जाएगा. So it will equals to h/2 f0 plus f1. It's coming from I1. Then from I2 you can get this value. From in you will be having this value. And by doing so
you can write down a to b fx dx, which will be equals to h by 2 f0 प्लस, आप बताओ मुझे कि f1 कितने टाइम रह सकता है. How many times you'll find f1 here? I'm simplifying this formula and that will be our final formula for trapezoidal rule. Now tell me how many times you might find f1. How many times? 2 times. So you may find 2 times f1. How many times you may find f2? It is also 2 times, right? And so on up to n minus 1, you can find 2 times. fn कितना times मिलेगा तुमको? एक ही बार मिलेगा ना लास्ट में. So you will have fn only once. So this is your final formula for trapezoidal rules. अब इसको तुमको याद करना है. इतना जब मैं डिस्कस किया to reach it here. To reach this equation, I have discussed so far. Okay. So if I integrate fx dx in the limit of a to b, then I'll have this result h by 2 f0 plus that, and that will be your trapezoidal rule. So write this down, क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम अभी करेंगे. We'll solve a problem here, okay, and we will find out that error. So any integration part, if in your exam the examiner or in the questions you have to calculate the error, then only you will be calculating the error. Otherwise it's fine to find out the value. Okay, लिख लिया इसको. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व ये प्रॉब्लम. Evaluate zero to 1 by 1 plus x squared dx using, write this down, trapezoidal rule, taking, मैंने बता दिया कि h का वैल्यू h इक्वल्स टू 1/5 लेना. ओके, इसको आप तुम इवेलुएट करो. Okay, so to solve this problem, at first what you have to find out, which term you have to find out. तुम्हारे पास फॉर्मूला है trapezoidal formula rule का. Now which values you have to find out? Tell me, कौन सा वैल्यू तुमको जानना है? रिया, कौन वैल्यू you have to find out? Which values you have to find out? किसका वैल्यू निकालना है? बोलो. f0 f1 का वैल्यू निकालना है. तो उसको निकलेगा कैसे? पहले तो ये प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. At first try to understand this problem. So what is your fx here? fx equals to, tell me. मैं क्या करता हूँ ना, जैसे कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या मालूम है. आई यूज टू राइट दिस डाउन द नोन टर्म्स, कि क्या क्या टर्म मुझे मालूम है. ओके, सो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मुझे मालूम है. ओके, इससे मैं x0 x1 निकल जाएगा, f0 f1 ये सब निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरा चाहिए. लेकिन ये निकलेगा कैसे? मुझे तो पॉइंट भी डिसाइड करना है ना. मुझे x0 चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 चाहिए एंड सो ऑन. सो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, क्या मुझे मालूम है? h इक्वल्स टू 1/5, दैट मीन्स 0.2. सिंप्लीफाई इट. ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? आर यू श्योर? टेल मी द फॉर्मूला.
b n is equals to b minus a, right? b minus a by h equals to n, so it is coming around 5. जिसको समझ में नहीं आएगा वो बताएगा। सबने समझा ये? सबने समझा ये? मणिकांतो? ओके। अभी जो होगा, अभी होगा हम लोगों को 5 मिल गया है। अब मेरा लिमिट है 0 to 1, तो मुझे ए बताओ क्या है? 0 एंड बी है 1। ये मुझे मालूम है, एज मुझे मालूम है, एज से मुझे एन कैलकुलेट कर लिया, और उससे ए मुझे मालूम है, बी मुझे मालूम है। ए मतलब हम लोग क्या डिनोट करते थे? x0, बी मतलब x n। तो मैं क्या करूँगा अभी मैं करूँगा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो first what I will do, I will make a table fx, okay. I will write the value of x0 value is 0, and I will write the value of xn here, that xn value is 1. So this is the x0 value which is equals to a value, and this is b value which is equals to xn value. बीच में x1 x2 रहेगा। तो यहाँ पे xn एक्चुअली x5 है। नाउ n इक्वल्स टू, मैंने उसको पोस्ट दिया, n का वैल्यू आया था हमारा 5 आया था। मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 5 पार्ट्स, ओके। 5 हिस्सों में तुम उसको डिवाइड करोगे। ये लकड़ी है, इस लकड़ी को तुमको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो लकड़ी का एक हिस्सा 0 से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होता है 1 पे। सो ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। सो दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो फर्स्ट इज 0.02, देन 0.4 होगा, 0.6 होगा, 0.8 होगा, देन 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.2। अगर समझ में नहीं आता है तो ये ऐसे सोच लेना। n इक्वल्स टू 5 मीन्स उस लकड़ी को या उस लेंथ को तुमको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये याद रखना। देन 0.4, देन 0.6, ओके। देन ये हो जाएगा 0.8, and finally you will have your xn equals to 1.0. fx का वैल्यू ये हो जाएगा f0, ये f1, f2, f3, f4 और ये fn हो के जाएगा, और f5। f0 का वैल्यू कितना आएगा? टेल मी। 1। f1 का वैल्यू करो कैलकुलेट करो। यही करना होता है ट्रेपेजॉइडल रूल में। थियोरी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशंस है, बट प्रॉब्लम करने में बहुत ही आसानी है। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज मच इजियर इन दिस केस देन द थियोरी, एंड आई एम लिविंग सम पोर्शन, सम पार्ट ऑफ दिस थियोरी behind because of some reason I don't want to make this thing complex. So that's why मैं जो इससे ज़रूरत है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, उसके बाहर नहीं जा रहा हूँ, ओके। 0.2 का कितना आएगा बोलो? इतना टाइम मत लगाओ, न्यूमेरिकल का क्लास कर रहे हो। हाउ मच? fx इक्वल्स टू एरिक, fx इक्वल्स टू 1 + x स्क्वायर। 0.96 रखते हैं, 1.5 छोड़ देते हैं। उसके बाद बोलो 0.86 आ रहा है ना, ठीक है। 0.6 का 0.73 आ रहा है, 735 आ रहा है, मतलब 74 रख दे रहा हूँ मैं। अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ अभी। इफ़ यू डोंट वांट टू अप्रोक्सीमेट, बी माई गेस्ट, ओके। तुम कर सकते हो, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। 0.8 जितना डेसिमल तक तुम एक्यूरेट ले सकते हो तो कर सकते हो, ओके। अगर तुम्हारा टाइम है तुम कर सकते हो तो यू कैन डू इट। तुम 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक जा सकते हो, न्यूमेरिकल है ये।
अब मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, या एग्जाम में स्पेसिफाइड रहता है कि इतना डेसिमल तक ही करना। 0.8 का बता दो, मतलब 0.61 अगर अप्रोक्सीमेट करता हूँ, 1 का हो जाएगा 0.5। ओके, नाउ what was our formula from the trapezoidal rule? 0 to 1, 1 by 1 plus x square dx. Okay, from trapezoidal rule I know h by 2. Okay, f0 plus 2, f0 plus f1 plus f2 plus f3 plus f4 तक जाएगा। हमारा fn क्या है? f5 है। fn जो है ना, f5 है ना, 0.5 है। इसको करो। ओके, हेलो। ओके, सो am I audible? Am I audible क्लास? ओके, कितना रिजल्ट है इसका? रिजल्ट कितना आया? What will be the result here? इसको ना तुम ये फॉर्मूला लिख के यू हैव टू बी, मतलब थोड़ा सा क्विक भी होना है, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा। ऑफलाइन एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम इसको h/2 कर देना, f0 का वैल्यू क्या है 1 पुट कर देना, f5 का वैल्यू क्या है 0.5 पुट कर देना, और इसका ना एक बार में कैलकुलेशन करो। तो f1 टू, हेलो 19 कोड़ी पिछन दिखा होगा ना। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো আসবো না ওই। ओके, नाउ टेल मी द रिजल्ट। सो तुम क्या करोगे ना, एग्जाम के टाइम पे इसको ना एक बार में ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों को फिर बाद में ऐड कर देना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कैलकुलेशन होगा ये फार्मूला लिखने के बाद एक बार में हो जाना चाहिए। आप लिखोगे उसके बाद करोगे तो उतना टाइम तो नहीं मिलेगा। कर सकते हो तो ठीक है, अगर तुम्हारा कन्फ्यूजन होता है तो तुम कर सकते हो, बट मैं क्या करता था ना, इसको ऐड कर देता था, क्योंकि मेरे पास वो डेटा दिख रहा है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और ये 1 एंड 0.5 1.5 ऐड कर देता था। फिर इसको h का वैल्यू कितना आया था 0.2 बाई 2 से उसको वो कर देता था, मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.784 आ गया। ओके, ये हम लोग कैलकुलेट किए यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल। नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग दिस, मतलब मैं नहीं करूँगा, तुम लोग करोगे, यूजिंग द रेगुलर जो हम लोग स्कूल में पढ़े थे। बाय यूजिंग द रेगुलर इंटीग्रेशन मेथड यू विल बी सॉल्विंग दिस डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे करना है याद होगा। सो 0 to 1, 1 by 1 plus x square dx, इसको तुम रेगुलर मेथड से करो। जो कि तुम्हारा वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा वो होगा तुम्हारा ट्रू वैल्यू। आर श्योर? कैसे किया बताओ, मुझे भी बताओ। यस, आई एम नॉट गेटिंग यू, थोड़ा सा लाउड बोलो। व्हाट? tan इनवर्स 1 कैसे मिल गया?
तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, π/4 आ रहा है, मतलब 0.785 आ रहा है। देखो तो तुम्हारा एरर कितना आया, 0.001, सो दैट विल बी योर एरर। ये एक्चुअल रिजल्ट है। ये वाला इंटीग्रेशन जिसको समझ में नहीं आया वो स्कूल वाला मैथमेटिक्स वाला बुक देख लेना कि कैसे करते हैं। और तुम्हारा एरर आ रहा है 0.001, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। ओके, अभी there are some cases where you cannot calculate this by your regular method, वो भी तुम फेस करोगे, अभी नहीं करोगे, नेक्स्ट क्लास में करोगे, तब मैं डिस्कस करूँगा कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है।